Hello my dear friends, I hope you all must be happy and healthy at home. So in last video, we have covered some important instrument of a money market such as call and notice money market, afterward treasury bill, commercial bill, etc. And in part 2 of a instrument in an Indian money market that we are going to cover. So in this video, we are going to cover very important instrument of a money market that is called certificate of deposit and commercial papers. So the number one is certificate of deposit. So what is certificate of deposit that we will do? So certificate of deposit is a negotiable promissory note issued at a discount to the face value, and it defined in the section 4 of Negotiable Instrument Act 1881, and this concept started in India in June 1989. So in short, certificate of a deposit is a negotiable. Negotiable means if I have a certificate of deposit, then I can easily transfer ownership of my certificate to another. That is called negotiable. And promissory notes means what? That will do. So we will go to one example. Suppose there is a one bank, and bank required 100 crore rupees from a company, and the company is also ready to give 100 crore rupees to bank. So when company will give 100 crore rupees to bank, that time company will ask to bank, I am giving you 100 crore rupees, so for that I should have one paper. I should have one guaranteed paper कि oh, I am giving you money. So bank will say yes. You prepare one paper, we will take a signature and all. So company will prepare one paper. In that paper, amount and date, whenever he will make a payment back, that every information used to write on a paper. Company's name, bank name, borrower, lender, every information there on a paper. And afterward on that paper, the lender will also sign and the borrower will also sign. That is called promissory note. So promissory note का मतलब होता है एक तरह का शॉर्ट में गारंटेड पेपर कि हाँ, ये कंपनी ने इस बैंक को 200 करोड़ रुपए दिए हैं 6 महीने के लिए, एंड आफ्टर 6 मंथ दैट कंपनी विल गो एंड गिव दैट प्रॉमिसरी नोट टू बैंक, एंड बैंक विल मेक अ पेमेंट ऑफ 200 crore rupees to the company. That is called certificate of deposit. So here the promissory note issued by company, so it is known as creditor and drawer, and it is accepted by bank, so it is known as debtor and drawee. सो इन शॉर्ट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मतलब होता है कि जब किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है, तो कोई कंपनी अगर उन्हें पैसे देती है उधार पर्टिकुलर पीरियड के लिए, तो वो कंपनी एक तरह का लेटर साइन करवाती है, जैसे गारंटेड लेटर. इसे बोलते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ money market, and it is generally used by commercial bank and financial institution. Next, these are bearer instrument and readily marketable. Certificate of deposit is also called bearer instrument and readily marketable. Bearer instrument means suppose if I have a certificate of deposit, then I can transfer the ownership of my promissory note to other. जैसे मेरे पास एक पर्टिकुलर बैंक का प्रॉमिसरी नोट है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, तो मैंने दूसरी कंपनी से पैसे लिए और उसको वो पेपर्स दे दिए, तो उस पेपर का ओनर कौन हो गया? वो दूसरा कंपनी. एंड रेडीली मार्केटेबल मीन्स हम अपना ओनरशिप उस पेपर से दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. हाईली लिक्विड एंड रिस्कलेस इंस्ट्रूमेंट. These are highly liquid. Highly liquid means with the help of certificate of deposit, we can easily convert them into cash, and the risk is also very, very less. Then who can issue certificate of deposit? So it is issued by commercial bank, excluding RRB, that is a regional rural bank, LAB, that is a local area bank, and it is just issued by scheduled commercial bank and Indian financial institution. Then certificate of deposit can be issued by bank for any amount. मतलब बैंक को जितना अमाउंट ज़रूरत है उतने का वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर सकता है, बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन नॉट इशू मोर देन द लिमिट डिसाइडेड बाय RBI. नेक्स्ट इज कितना पैसा वो इशूड कर सकते हैं. सो मिनिमम अमाउंट दे कैन इशू इट्स 1 लाख,
and multiple of a 1 lakh. Multiple of 1 lakh means 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, like this. So minimum 1 lakh or maximum 1, 2, 3, 4 like this. नेक्स्ट इज हु कैन सब्सक्राइब, कौन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है. सो इट कैन बी एक्सेप्टेड बाय इंडिविजुअल, कॉर्पोरेट, कंपनीज, ट्रस्ट. NRI can be also accepted, but there is a one condition that it is a repatriable basis. It means that if any NRI accepted certificate of deposit from a bank, so he cannot transfer the ownership of that promissory notes to other. Suppose एक NRI ने इंडियन कमर्शियल बैंक को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के बदले पैसे उधार दिए, तो वो NRI जो उसके पास जो प्रॉमिसरी नोट है वो किसी और को देकर उसका ओनर किसी और को नहीं बना सकता है. नेक्स्ट इज what is the maturity period of a certificate of deposit for a bank as well as financial institution. So for a commercial bank, certificate of deposit maturity period is 7 days to 1 year, and for a financial institution the maturity period is 1 year to 3 years. Next is there are two type of certificate of deposit. Means what type of certificate of deposit issued by the companies for bank. First is demand promissory note and second is usance promissory note. So what is the meaning of this? Again we come to the example. Suppose bank has borrowed money from a corporate company and the corporate company has issued promissory note to bank, that in that they have written that after 6 months the bank is going to make a payment back to company. Now suppose the bank the corporate company has issued demand promissory note. Demand promissory note का मतलब होता है कि जब भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होगी तो बैंक को उनको पैसे देने पड़ेंगे. तो सपोज़ के कंपनी को 1 महीने के बाद पैसे की ज़रूरत होगी तो बैंक को कैसे भी करके 1 महीने के बाद पैसे अरेंज करके कंपनी को देने पड़ेंगे. बट सपोज़ प्रॉमिसरी नोट यूसेंस हो, उस तो यूसेंस का मतलब होता है जितना टाइम पीरियड उसमें लिखा है बैंक उतने टाइम पीरियड के बाद ही कंपनी को पैसे देगा, भले कंपनी को कितने भी पैसे की ज़रूरत हो. दैट इज़ कॉल्ड टू टाइप्स ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. नेक्स्ट इज कमर्शियल पेपर. देयर इज़ अ small difference between certificate of deposit and commercial paper, so please listen the video carefully. Commercial paper is issued in a form of promissory note with a fixed maturity period. It started in India in Jan 1990. Then what is a commercial paper? Now please look at the example properly so you will understand. Now suppose there is a one company Tata and company required some money. Suppose Tata company required 100 crore rupees and there is a one more company Hindustan Unilever. Hindustan Unilever is ready to pay 100 crore rupees to Tata, but both the company cannot deal with each other directly, so they will appoint one broker. Usually the broker is appointed as a bank only, so Tata and Hindustan Unilever they both will appoint broker as a commercial bank. So commercial bank will work as a broker between Tata and Hindustan Unilever. Tata required money and Hindustan Unilever ready to pay money. So commercial bank क्या करेगा, हिंदुस्तान यूनिलीवर के पास कमर्शियल पेपर सबमिट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ टाटा एंड उनसे पैसे लेगा कितने 100 करोड़ रुपीज़, और आफ्टरवर्ड ही विल पे दैट 100 करोड़ रुपीज़ टू टाटा अपना कमीशन वगैरह काट के. तो क्या डिफरेंस आया, पहले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में देयर वाज नो ब्रोकर, बिकॉज ब्रोकर कौन बनता है, बैंक. तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तो बैंक ही इशू करता है डायरेक्टली कंपनी से, सो देयर वाज नो नीड ऑफ अ ब्रोकर. बट इन कमर्शियल पेपर द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस बिटवीन कंपनीज, सो वो क्या करते हैं, बैंक को एज अ ब्रोकर अपॉइंट करते हैं. नेक्स्ट, who can borrow with the help of commercial paper. So the commercial paper can be borrowed on issued by corporate companies, primary dealers and all India financial institution, but there are some condition. What is the condition? The company who issued commercial paper they should have annual net worth not less than 4 crore. Then maturity period of CP or we can say commercial paper is minimum 7 days and maximum up to 1 year. Then how much amount they can borrow? They can borrow 5 lakh or multiple of 5 lakh.
Multiple of 5 lakh means 5 lakh, 6 lakh, 7 lakh, etc. Next, so what is the difference between certificate of deposit and a commercial paper? Certificate of deposit means if any bank wants to borrow money from any company, that time they can directly deal with each other. Okay, and when company will give money to बैंक, तो कंपनी क्या करेगी, बैंक से एक प्रॉमिसरी नोट लिखवा के लेगी कि हाँ मैंने आपको पैसे दिए हैं, आपको ये पीरियड के बाद मुझे पैसे रिटर्न करने हैं. और कमर्शियल पेपर में क्या डिफरेंस है कि जब किसी एक कंपनी को दूसरी कंपनी से पैसे उधार लेने हैं और दूसरी कंपनी को पहली कंपनी को पैसे उधार देने हैं, तो वो बैंक को एज अ ब्रोकर अपॉइंट करेंगे और वो बैंक उन दोनों के बीच में लेन देन करवाता है. तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कौन करता है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी के साथ. और कमर्शियल पेपर कौन इशू करता है, कंपनी के साथ. दिस इज़ द डिफरेंट एंड दिस टू आर अ वेरी वेरी हाईली लिक्विड एंड रिस्क लेस इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ मनी मार्केट. ज़्यादा करके जब भी किसी बैंक को ज़रूरत होती है तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यूज़ करता है पैसे लैंड करने के लिए, पैसे बोरो करने के लिए. एंड कमर्शियल पेपर जनरली यूज बाय कंपनीज व्हेन दे रिक्वायर्ड मीडियम लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड. I hope so student this video will help you to clear your doubt about your study. So please watch entire video so your doubt can be clear. Please like, share and subscribe my channel and write in a comment box how my videos are helping you to clear your doubts. Thank you so much.